हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल है। तो हम कहेंगे कि लेट रूट फाइव इज एन इरेशनल। अगर रूट फाइव एक रेशनल है अगर रूट फाइव रेशनल है तो हम कह सकते हैं कि वो एक्स अपॉन वाई के इक्वल है, वेयर एक्स एंड वाई आर आवर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है ओनली वन फैक्टर, और वी कैन से ओनली वन कॉमन फैक्टर, and its common factor is only 1. Okay, now here root 5 equals to x upon y, so we are squaring both sides. Root 5 whole square upon xy whole square. The square and root will cancel and it will become x square upon y square. Here this is y square comes here and multiplied with 5, so we get 5y square equals to x square. So now if 5 will get यहाँ here, अगर 5 यहाँ आकर x से डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि 5 will divide x square, and we can also say that if 5 divide x square then 5 also divide the x. Let x equals to 5k. Put the value of 5k x equals to in this equation. So we get 5y square equals to 5k square, and 5 square is 25, so 5y square equals to 25k square. 5 will get here and 5 ones are 5 fives are, so we get y square equals to 5k square. So we can say if 5 will come here, 5 will divide y square and 5 also divide the y, but our assumption is that x and y are co-prime, means only one common factor, but we get one more common factor which is 5. So we can say that our assumption is proved wrong. Therefore we can say, अगर हमारा assumption wrong था तो हमने ये जो कंसिडर किया था let root 5 is an rational, यही गलत होगा, तो हम अब कह सकते हैं कि therefore root 5 is an rational irrational. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ हमने प्रूव किया कि रूट 5 एक इरेशनल है।